So we will continue to further Mahākhandhaka part. अगर रिकैप करें तो हम महा नॉट कश्यप बंधुओं की कथा सुन रहे थे, जिसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें सूक्त का नाम था पुरुवेल पाटीहारी कथा। Where Lord Buddha has defeated the Naga, and we will read from here. So, Render ji, are you available to read English or Pali, whatever you wish? मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ ठीक है, मैं हाँ मैं आप पाली पढ़िए, मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूँ। जी ठीक है। अथको भगवा उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य अस्मस्य अविदूरे अन्यतरस्मिन् वनसन्धे विहासी अथ खो चत्तारो महाराजानो अभिक्कन्ताय रत्या अभिक्कन्तवन्ना केवलकपं वनसन्दं ओभासेत्वा येन भगवा तेन उपसङ्क्रमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा चतुर्दिशा अट्ठन्सु सेयथापि महन्ता अग्निखन्दा अथ को उरुवेल कश्यपो जटिलो तस्सारथिया अच्चयेन ये भगवा तेन उपसङ्क्रमित्वा भगवन्तम् एतद्वोच कालो महासमन्निष्ठितं भन्तं केनुखोते महासमन् अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्ना केवलकपं वनसन्दं ओभासित्वा येन त्वं तेन उपसङ्क्रमित्वा तम् अभिवादयित्वा चतुर्दिशा अट्ठन्सु संयथापि महान्ता अग्निखण्डाति एते को कस्सप्तचारो महाराजानो येनाहं तेन उपसङ्क्रमिन्सु धम्मस्य वनायाति अथ को उर्वेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्दिको को महासमनो महानुभावो यत्र हि नाम चत्तारोऽपि महाराजानो उपसङ्क्रमिष्यन्ति धम्मसवनाय न त्वेव च कोऽर्हा यथा अहन्ति अथ को भगवा उर्वेल कश्यपस्य जटिलस्य भक्तं भुञ्जीत्वा तस्मिन्नेव वनसन्दे विहासि द्वितीयं पाठिहार्यम्। नरेंद्र जी आप पढ़ देंगे? हाँ पढ़ रहा हूँ। Soon afterwards, the Buddha stayed in a forest grove not far from Urvela Kassap heritage. Then, when the night was well advanced, the magnificent four great kings approached the Buddha, illuminating the whole forest grove. They bowed down to the Buddha and stood at the four cardinal points, appearing like great bonfires. The next morning, Urvela Kassapa went to the Buddha and said, It is time great ascetic, the meal is ready. And who was it that visited you last night? That was the four great kings. They came to me to hear the teaching.
Urvila Kashyapa thought, the great ascetic is powerful and mighty in that even the four great kings got to him to hear the teaching. But he is not a perfected one like me. The Buddha ate his meal and continued to stay in the same forest grove. The second wonder is अथ को शको देवानमिन्दो अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्नो केवलकप्पं वनसण्डम् ओभासेत्वा येन भगवा तेन उपसङ्क्रमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तम् अट्ठासि सयथापि महाअग्निखण्डो पुरीमाहि वह्निधाहि अभिकन्ततरो च पञ्चतरो च अथ को उर्वेलकश्यपो जटिलो तस्सारथ्या अच्चयेन येन भगवा तेन उपसङ्क्रमित्वा भगवन्तम् एतदुवोच कालो महासमर्दिष्टितं भन्तं कोऽनुघोषो महासमन अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवन्नो केवलकपं वनसण्डम् ओभासेत्वा येन त्वं तेन उपसङ्क्रमित्वा तम् अभिवादयित्वा एकमन्तम् अट्ठासि संयथापि महाअग्निखण्डो पुरीमाहि वह्निवाहि अभिकन्ततरो च प्रणीततरो चाति एषोऽखो कश्यपो देवानिन्दो येनाहं तेन उपसङ्क्रमी धम्मस्य वनायाति अथ को उर्वेलकश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्दिको को महासमनो महानुभावो यत्र हि नाम शक्तोऽपि देवानन्दो उपसङ्क्रमिष्यति धम्मसवनाय न त्वेव चखो अर्हा यथा अहन्ति अथ को भगवा उर्वेलकश्यपस्य जटिलस्य भक्तं भुञ्जीत्वा तस्मिन्नेव वनसण्डे विहासि तृतीयं पाठिहार्यम् पेंद्र जी आप पढ़ रहे हैं? Once again, when the night was well advanced, the magnificent ruler of the gods approached the Buddha, illuminating the whole forest grove. He bowed down to the Buddha and stood up, appearing just like a great bonfire, but it was more splendid and sublime than the previous one. The next morning, Urvela Kashyapa went to the Buddha and said, "It is time, great ascetic, the meal is ready." "And who was it that visited you last night?" "That was Taka, the ruler of the gods. He came to me to hear the teaching." Urvela Kashyapa thought, the great ascetic is powerful and mighty, in that even Taka, the ruler of the gods, goes to him to hear the teaching. But he is not a perfected one like me. The Buddha ate his meal and continued to stay in the same forest grove. अच्छा ये अलग अलग मतलब पहले उसमें कौन सा इसमें तो कश्यप दूसरे उसमें कौन सा नहीं, अभी तो ये सबसे बड़े भाई के बारे में ही बता रहे हैं, उर्वेला कश्यप। मतलब ये रिपीट ही हो रहा है ना तो हाँ, मतलब वो एवरी नाइट उनको अलग अलग लोग मिलने आ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना अलग अलग लोग पूछ रहे हैं अलग अलग क्या या इसमें कटका है। यस, फर्स्ट नाइट 4 ग्रेट किंग्स आए थे, अभी सेकेंड नाइट में सबका जो उनसे भी ज्यादा सबलाइन स्टेज है।
Shall I read again further? जी जी जी. अथ को ब्रह्मा सहम्पति अभिकंताय रत्या अभिकंतवर्णो केवलकपं वनसंडं ओभासेत्वा येन भगवा तेन उपसंक्रमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठासि सयथापि महाअग्निखण्डो पुरिमाहि वर्णिमाहि अभिकन्ततरो च पनीततरो च अथ को उरुवेन कश्यपो जटिलो तस्सारथ्या अच्चयेन येन भगवा तेन उपसंक्रमित्वा भगवन्तम् एतदुवोच कालो महासमनिष्ठितं भक्तं को नु घोषो महासमन अभिकंताय रत्या अभिकंतवर्णो केवलकपं वनसंजं ओभासेत्वा येन त्वं तेन उपसंक्रमित्वा तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठासि सयथापि महाअग्निखण्डो पुरिमाहि वन्यनिवाहि अभिकन्तन्तरो च पणीततरो चाति एषो कोकसप् ब्रह्मा सहम्पति येनाहं तेन उपसंक्रमे धम्मसवनायाति अथ को उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महद्दिको को महासमनो महानुभावो यत्र हि नाम ब्रह्मापि सहम्पति उपसंक्रमिष्यति धम्मसवनाय नात्वेव च को अर्हा यथा अहन्ति अथ को भगवा उर्वेल कश्यपस्य जटिलस्य भक्तं भुञ्जित्वा तस्मिन् येन वनसण्डे विहासि चतुर्थं पाटिहार्यम् Once again, when the night was well advanced, Shampati, the magnificent supreme being, approached the Buddha, illuminating the whole forest grove. He bowed down to Buddha and stood up, appearing just like a great bonfire, but it was even more splendid and sublime than the previous one. Gopal, the next morning, Uvalkasap went to the Buddha and said, "It is time, great ascetic, the meal is ready. And who was this that visited you last night?" "That was Sahampati, the Supreme Being. He came to me to hear the teaching." Uvalkasapa thought, "The great ascetic is powerful and mighty, in that even Sahampati, the Supreme Being, goes to him to hear the teaching. But he is not a perfected one like me." The Buddha ate his meal and continued to stay in the same forest. The fourth wonder is तेनिकोपनिशमयेन उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य महायज्ञो पचो पठितो होति केवलकप्पा च अङ्गं गधा पहूतं खादनीयं भोजनीयं आदाय अभिक्कमुतुकामा होन्ति अथ को उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि एतरहि को मे महायज्ञो पच्युपठितो केवलकप्पा च अङ्गं गदा पहूतं खादनीयं भोजनीयं आदाय अभिक्कमिष्यन्ति सचे महासमनो महाजनकाये इद्धि करिष्यति महासमणस्य लाभसत्कारो अभिवर्धिष्यति मम लाभसत्कारो परिहायिष्यति अहो नून महासमनो स्वातनाय नागच्छेयाति अथ को भगवा उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य चेतसा चेतो परिवितक्कमन्याय उत्तरकुरुं गत्वा ततो पिण्डपातम् आहरित्वा अनोतत् दहे परिभुञ्जित्वा तथैव दिवाविहारम् अकार्षि
अथ को उर्वेल कश्यपो जटिलो तस्सारथ्या अच्छयेन येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं एतद्वोच कालो महासमर्निष्ठितं भक्तं किन्मुखो महासमर् हियो नागमासी अपि चामयं तं सराम किन्मुखो महासमरो नागच्छतीति खादनीयस्य च भोजनीयस्य च ते पटिवीसो ठपितो ते ननु ते कस्सप एतद्होषि एतरहि खो मे महा यज्ञो पच्युपठितो केवलकप्पा च अङ्गं गधा पहूतं खादनीयं भोजनीयम् आदाय अभिक्मिष्यन्ति सचे महासमुनो महाजनकाये इद्धिपाटिहार्यं करिष्यति महासमुनस्य लाभसत्कारो अभिवदिष्यति मम लाभसत्कारो परिहायिष्यति अहो नून महासमुनो स्वातनाय नाभिच्छाया इति खो अहं कस्सप्तव चेतसा चेतोपरि वितक्कमय्याय उत्तरकुरुं गत्वा ततो पिण्डपातम् आहृत्वा अनोतत्तदहे परिभुञ्जित्वा तथैव दिवाविहारम् आकाशन्ति अथ को उरुवेलकस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्दिको को महासमुरो महानुभावो यत्र हि नाम चेतसापि चित्तं पजानिश्चितै न त्वेव च को अर्हा यथा अहन्ति अथ को भगवा उरुवेलकस्य जटिलस्य भक्तं भुञ्जित्वा तस्मिन्नेव वनसण्डे विहासि पञ्चमं पाटिहार्यम् At this time, Urvelakasap was holding a great sacrifice, and the whole of Ang and Magad wanted to attend with much food of various kinds. Urvela Kastapa considered this and thought, if the great ascetic performs a wonder of supernormal power for the great crowd, he will get more material support and honor, whereas I will get less. I hope he doesn't come tomorrow. The Buddha read the mind of Urvela Kassapa. He then went to Uttarakuru, collected all alms food there, ate it at the Anotap lake, and stayed there for the day's meditation. The next morning, Urvela Kassapa went to the Buddha and said, "It is time, great ascetic, the meal is ready. And why didn't you come yesterday? We did think of you and set aside a share of various kinds of food. But Kassapa, didn't you think, I hope he doesn't come tomorrow? Because I read your mind. I went to Uttarakuru, collected alms food there, ate it at the Anothat lake, and stayed there for the day's meditation." Urvela Kassapa thought, the great ascetic is powerful and mighty in that he can read the mind of others, but he is not a perfected one like me. The Buddha ate his meal and continued to stay in the same forest grove. The fifth wonder is finished. तेनकोपनिशमयेन भगवतोपनिषत्कुलम् उत्पन्नं होति अथ को भगवतो एतद्होषि अथनुको अहं पंशुकूलं धोवयन्ति अथ को शक्को देवान् निन्दो भगवतो चेतसा चेतो परिवितक्कम्
परिवितक्कम् अज्ञाय पाणिना पोखरणिं खणित्वा भगवन्तम् एतद्वोच इदमन्ते भगवा पंशुकूलं धोवतुति अथ को भगवतो एतद्होषि किं हि नुखो अहं पंशुकूलं परिमद्यन्ति अथ को शक्तो देवानिमिन्दो भगवतो चेतसा चेतो परिवृतक्कमय्याय महतिं शिलम् उपनिषत्ति इदमन्ते भगवा पंशुकूलं परिमद्यतु हि अथ को भगवतो एतद्होषि किं हि नुखो अहं आलम्बित्वा उत्तरेयन्ति अथ को ककुदे अधिवत्ता देवता भगवतो चेतसा चेतो परिवितक्कमय्याय साकं ओनामेसि इदभन्ते भगवा आलम्बित्वा उत्तरतु अथ को भगवतो एतद्होषि किं हि नुखो अहं पंशुकूलं विसज्जेयन्ति अथ को शक्को देवानिमिन्दो भगवतो चेतसा चेतो परिवितक्कमय्याय महतिं शिलम् उपनिक्षिपि इदभन्ते भगवा पंशुकूलं विसज्जेतुति अथ को उर्वेल कश्यपो जटिलो तस्सारथ्या अर्चयेन येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तम् एतद्वोच कालो महासमन् निठितं भत्तं किं नुखो महासमन् नायं पुब्बे इद पोखरिणी सायं इद पोखरिणी नैमा शिला पुब्बे उपनिक्षिता केनिमा शिला उपनिक्षिता नैमस्य ककुधस्य पुब्बे शाखा ओनता सायं शाखा ओनताति इदमे कश्यप पश्युकूलं उत्पन्नं अहोसि तस्य मह्यं कश्यप एतद्होसि कत्तुनुखो अहं पंशुकूलं धोवेयति अथ को कश्यप शक्को देवानिमिन्दो मम चेतसा चेतो परिवृतक्कमय्याय पाणिना पोखरणिं खणित्वा मम एतद्वोच। निखिल वो आप स्किप कर सकते हो, सब रिपीट हो रहा है एक्चुअली ओके नीचे तक। अर्थ खो उर्वेल कश्यप जटिलस्य एतदहोसी वहां तक। ये ठीक है। किम हि नुखो अहं यहाँ से पढ़ देता हूँ। इदभन्ते भगवा पंशुकूलं विसज्जेतु इति सायं कश्यपमनुष्येन उपनिक्षिप्ता शिला अथ को उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्दिको खो महासमणो महानुभावो यत्र हि नाम शक्कोऽपि देवानिमिन्दो वैयावच्चं करिष्यति न त्वेव चक्षो अर्हा यथा अहन्ति अथ को भगवा उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य भक्तं भुञ्जित्वा तस्मिन्नेव वनचण्डे विहासि अथ को उरुवेल कश्यपो जटिलो तस्सारथ्या अर्चयेन येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवतो कालं आरोचेसि कालो महासमरनिष्ठितं भट्टन्ति गच्छ त्वं कश्यप आयामहं ति उर्वेल कश्यपं जटिलं उयोजयित्वा याय जम्बुदीपो पञ्यायति ततो फलं गृहीत्वा पठमन्तरम् आगत्वा अज्ञागारे निषीदि अधस्साखो उर्वेल कश्यपो जटिलो भगवन्तम् अज्ञागारे निस्सिन्नं विश्वान् भगवन्तम् एतद्वोच कथमेन त्वं महासमरमग्गेन आगतो अहं तया पठमतरं पक्कन्तो सो त्वं पठमतरं आगत्वा अज्ञागारे निस्सिन्नोति इदा अहं कश्यपं उयोजयित्वा याय जम्बूदीपो पञ्यायति ततो फलं गृहीत्वा पठमन्तरम् आगत्वा अज्ञागारे निस्सिन्नो इदखो कश्यप जम्बू
फलं वर्णसम्पन्नं गन्धसम्पन्नं रससम्पन्नं सचे आकाङ्क्षी परिभुञ्जाति अलं महासमं त्वं तं अर्हसि त्वं तं परिभुञ्जाहीति अथ को उरुवेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महेद्दिको को महासमुरो महानुभावो यत्र हि नाममं पठमं योजयित्वा याय जम्बूदीपो परियायति ततो फलङ्गहेत्वा पठमं तरम् आगन्त्वा अज्ञागारे निषीदिष्यति न त्वेव च को अर्हा यथा अहन्ति अथ को भगवा उर्वेलकश्यपस्य जटिलस्य भक्तं भुञ्जित्वा तस्मिन्नेव वनसण्डे विहासि अथ को उर्वेलकश्यपो जटिलो तस्सारथ्या अच्छयेन येन भगवा तेन उपसङ्क्रमित्वा भगवतो कालम् आरोचेसि कालो महासमरनिष्ठितं भर्तन्ति गच्छ त्वं कश्यप आयामहंति उरुवेलकश्यपं जटिलं योजयित्वा याय जम्बूदीपोपैनायति तस्सा अविदूरे अम्बो पे तस्सा अविदूरे आमलकी ते तस्सा अविदूरे हरितिकी ते तावतिंस गच्छत् गन्त्वा पारिच्छत् पारिच्छत्तत्पुष्पं गृहीत्वा पटमन्तरम् आगन्त्वा अज्ञागारे निषीदि अधस्साको उर्वेलकश्यपो जटिलो भगवन्तम् अज्ञागारे निःसिन्नन् निःश्वान भगवन्तम् एतदुवोच कथमेन त्वं महासमणमग्रेण आगतो अहं तया पठमन्तरं पक्कन्तो सो त्वं पठमन्तरम् आगन्त्वा अज्ञागारे निःसिन्नोति इदाहं कश्यप्तं उयोजयित्वा तावतिंस गन्त्वा पारिच्छत्त पारिच्छत्तपुष्पं गृहीत्वा पठमन्तरम् आगन्त्वा अज्ञागारे निःसिन्नो विदुखो कश्यप पारिच्छत्तपुष्पं मण्डसम्पन्नं गन्धसम्पन्नं सचे आकाङ्क्षसि गन्हाति अलं महासमं त्वयैव तं अर्हसि त्वमेव तं गन्हाति अथ को उर्वेलकश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महद्दिको को महासमुरो महानुभावो यत्र हि नाममं पठमन्तरं योजयित्वा तावतिंस गन्त्वा पारिच्छत्तपुष्पं गृहीत्वा पठमन्तरम् आगन्त्वा अज्ञागारे निषीदिष्यति न त्वेव च को अर्हा यथा अहन्ति। यहाँ तक पढ़ लीजिए पहले। महेंद्र जी आप म्यूट करेंगे। Soon afterwards, the Buddha got a rag and he thought, where can I wash it? Reading the Buddha's mind, Satka dug a pond with his hand and he said to the Buddha, Sir, please wash it here. The Buddha thought, where can I beat it? Reading the Buddha's mind once again, Satka placed a boulder there and he said to the Buddha, Atkho Sakko. He said to the Buddha, Sir, please beat it here. The Buddha thought, what can I hold on to get out of the pond? A god living in an Arjun tree read the Buddha's mind. He then bent down a branch and said to the Buddha, please come out by holding on to this. The Buddha thought, where can I dry this rag? Reading the Buddha's mind and yet again, Satka placed another boulder there and he said to the Buddha, Sir, please dry it here.
The next morning, Urvela Kassapa went to the Buddha and said, "It is time, great ascetic, the meal is ready." But what is going on? There was no pond here before, but now there is. These boulders were not here before. Who placed them here? And this Arjun tree didn't have a bent branch, but now it does. When the Buddha told him what had happened, Urvela Kassapa thought, the great ascetic is powerful and mighty, in that even Sakkar, the ruler of the gods, performed services for him, but he is not a perfected one like me. The Buddha ate his meal and continued to stay in the same forest grove. The next morning, Urvela Kassapa went to the Buddha and said, "It is time, great ascetic, the meal is ready. You just go ahead, Kassapa, I will come." After dismissing him, he took a fruit from a rose apple tree, the tree after which the rose apple land of India is named. The tree after which the rose apple land of India is named, and then arrived first in the fire hut where he sat down. When Urvelakasapa saw the Buddha sitting there, he said to him, "Which path did you take? I left first, but you are already here." The Buddha told him what he had done and did. "This rose apple has a good color, and it's fragrant and delicious too. You can have it if you wish. There is no need. You deserve it, and you should have it." Urvelakasapa thought, the great ascetic is powerful and mighty in that he dismissed me, then took a fruit from a rose apple tree, and still arrived first in the fire hut. But he is not a perfected one like me. The Buddha ate his meal and continued to stay in the same forest grove. The next morning, Urvelakasapa went to the Buddha and said, "It is time, great ascetic, the meal is ready. You just go ahead, Kassapa, I will come." After dismissing him, he took a fruit from a mango tree, not from far from the rose apple tree. He took a fruit from an ambilic myrobalan tree, not far from the mango tree. He took a fruit from a ambilic myrobalan tree, not far from the ambilic myrobalan tree. He went to Avatimas heaven, took a flower from the orchid tree, and then arrived first in the first hut where he sat down. Fire. He arrived first in the fire hut where he sat down. When Urvelakasapa saw the Buddha sitting there, he said to him, "Which path did you take? I left first, but you are already here." The Buddha told him what he had done and added, "This orchid tree flower is colorful and fragrant. You can have it if you wish. There is no need, you deserve it and you should have it." Urvelakasapa thought, the great ascetic is powerful and mighty in that he dismissed me, then went to Savitmasta heaven, took an orchid tree flower, and still arrived first in the first hut, but he is not a perfected one like me. मैं पढ़ता हूँ आगे। तेन खोपन समयेन ये जटिला अग्निं परिचरितु कामा नासक्कोन्ति कट्टानि पालेतुम् अत्र खोते सं जटिलानम् एतद्होषि निःसंशयं खो महासमिनस्य इत्थानुभावो यथामयं नासक्कों कट्टानि पालेतुन्ति अथ खो भगवा उर्वेल कश्यपं जटिलम् एतद्वोच पालयन्तु कश्यप कट्ठानीति पालयन्तु महासमिनाति सखिदेव पञ्चकट्ठशतानि पालयन्सु अथ खो उर्वेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद् होषि
महिद्रिको खो महासमुनो महानुभावो यत्र हि नाम कट्टानिपि पालियस्सन्ति नात्वेव च खो अर्हा यथा अहन्ति तेन कोपनिसमयेन ते जटिला अग्निं परिचरितुकामा नाशक्नोति अग्निं उज्ज्वलेतुम् अथ को ते संजटिलानम् एतद्होषि निःसंशयं को महासमुनस्य इद्धानुभावो यथा मयं नासत्कोम अग्निं उज्ज्वलेतुं अथ को भगवा उर्वेल कश्यपं जटिलम् एतद्वोच उज्ज्वलयन्तु कश्यप अग्निति उज्ज्वलयन्तु महासमुनाति सखिदेव पंच अग्निशितानि उज्ज्वलींसु अथ को उर्वेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्दिको को महासमुनो महानुभावो यत्र हि नाम अग्निपि उज्जील्यन्ति नात्वेव च को अर्हा यथा अहन्ति तेन कोपनसमयेन ते जटिला अग्निं परिचरित्वा न शक्नोति अग्निं विज्झापयितुम् अथ को तेषां जटिलानम् एतद्होषि निःसंशयं को महासमुनस्य इद्धानुभावो यथामयम् नाशक्नोम अग्निं विज्झापयितुमिति अथ को भगवा उर्वेल कश्यपस्य जटिलम् एतद्वोच विज्झायन्तु कश्यप अग्निति विज्झायन्तु महासमुनाति सखिदेव पंच अग्निशतानि विज्झायसुम् अथ को उर्वेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्दिको को महासमुनो महानुभावो यत्र हि नाम अग्निपि विज्झायन्ति नात्वेव च को अर्हा यथा अहन्ति तेनोपनसमयेन ते जटिला शीतासु हेमन्तिकासु रत्तिषु अन्तरट्टकासु हिमपातसमये नज्जा निरञ्जराय उम्मुज्जन्तिपि निमुज्जन्तिपि उम्मुज्जन् निमुज्जन्ति निमुज्जन्नम्पि करोन्ति अथ को भगवा पंचमत्तानि मन्दामुखशतानि अभिनिम्नि यत् ते जटिला उत्तरित्वा विसिव्येषुं अथ को तेषां जटिलानम् एतद्होषि निःसंशयं को महासमुनस्य इद्धानुभावो यथ इमा मन्दामुखयो निम्मिताति अथ को उर्वेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्दिको को महासमुनो महानुभावो यत्र हि नाम तावबहु मन्दामुखयोऽपि अभिनिम्मितनिस्सति नात्वेव च को अर्हा यथा अहन्ति Soon afterwards, those dreadlocked ascetics wanted to tend the sacred fire, but were unable to split the log. They thought this must be because of the supernormal powers of the great ascetic. The Buddha said to the Urvela Kassapa, "May the logs be split, Kassapa." "Yes, may they," he replied, and 500 logs were split all at once. Urvela Kassapa thought, the great ascetic is powerful and mighty, in that he can split logs just like that. But he is not a perfected one like me. Those ascetics still wanted to tend the sacred fire, but were unable to light it. They thought this must be because of the supernormal powers of the great ascetic. The Buddha said to Urvela Kassapa, "May the fires be lit, Kassapa." "Yes, may they,"
he replied, and 500 fires were lit all at once. Urvela Kassapa thought, the great ascetic is powerful and mighty, in that he can light fire just like that, but he is not a perfected one like me. When those ascetics had tended the sacred fires, they were unable to extinguish them. They thought this must be because of the supernormal powers of the great ascetic. The Buddha said to Urvela Kassapa, may the fire be extinguished, Kassapa. Yes, may they be, he replied, and the 500 fires were extinguished all at once. Urvela Kassapa thought, the great ascetic is powerful and mighty in that he can extinguish fire just like that, but he is not a perfected one like me. At that time, it was midwinter with cold days and snow. During this period, those ascetics emerged from the Niranyara river, immersed themselves in it, and repeatedly immersed themselves. Then the Buddha manifested 500 pans with hot coals, where those ascetics could warm themselves after coming out of the water. They thought these were no doubt created by the supernormal powers of the great ascetic. Urvela Kassapa thought, the great ascetic is powerful and mighty, in that he can manifest so many pans with hot coal, but he is not a perfected one like me. तेनिकोपन समयेन महा अकाल मेघोपावसे महा उदक वाहको संयजाहि यस्मिन् पदेशे भगवा विहरति सो पदेशो उदकेन न उत्थटो होति अतको भगवतो एतद्होषि यन्नु नाहं समन्ता उदकं उत्सारे त्वा मध्ये रेणुहताय भूमिया चंकमेयन्ति अतको भगवा समन्ता उदकं उत्सारे त्वा मध्ये रेणुहताय भूमिया चंकमी अतको उर्वेल कश्यपो जटिलो माहेवक्षो महासमणो उदकेन बूढो अहोसीति नावाय संबहुले हि जटिले हि सद्धिं यस्मिन् पदेशे भगवा विहरति तं पदेशं अगमासि अदस्साखो उर्वेल कश्यपो जटिलो भगवन्तं सम्मन्ता उदकं उत्सारे त्वा मध्ये रेणुहताय भूमिया चक्रमन्तं दिस्वान् भगवन्तं एतद्वोच इदं नु त्वं महासमणाति अयं हम अस्मि कश्यपाति भगवा वेशाहं अभुगन्त्वा नावाय पच्छुट्टासि अतको उर्वेल कश्यपस्य जटिलस्य एतद्होषि महिद्दिको खो महासमणो महानुभावो यत्र हि नाम उदङ्कम्पि न पवाहिष्यति न त्वेव चाखो अर्हा यथा अहन्ति अतको भगवा एतद्होषि चिरंपि खो इमस्य मोघपुरुषस्य एवं भविष्यति महिद्दिको खो महासमणो महानुभावो न त्वेव चखो अर्हा यथा अहन्ति यन्नुनाहं इमं जटिलं संवेजयन्ति अतको भगवा उर्वेल कश्यपं जटिलं एतद्वोच नेव चाखोपं कश्यप अर्हा नापि अर्हतमग्ग अर्हतमग्ग समापन्नो सापि ते पटिपदा नत्थियायं त्वं अर्हा वा अस्ससि अर्हन्तमग्गं वा समापन्नोति। यहाँ तक अर्हन्तमग्गं। निखिल आप सेक्शन पूरा करो, फिर उसकी बात समझ आएगी। ओके आप पूरा कर लो, यू विल सी व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस ना। तो वेरी सिग्निफिकेंट सूत्र कमिंग अप जहां हमारा ग्रुप कल गया था एक्चुअली, सो मे बी फिनिश द होल थिंग एंड देन वील बेटर अप्रिशिएट दिस सेक्शन। ओके अतको उरुवेल कश्यपो जटिलो भगवतो पादेषु शिरसा निपपतित्वा भगवन्तं एतद्वोच लभ्येयाहं भन्ते भगवतो सन्तिके पवच्चं लभ्येयं उपसम्पदन्ति
त्वं खोषि कश्यप पंचन्नं जटिल शतानं नायको विनायको अग्गो पमुखो पामोक्षो ते पिताव अपलोके हि यथा ते मय्य सन्ति तथा ते करिष्यन्तीति अत को उर्वेल कश्यपो जटिलो येन ते जटिला तेन उपसंकमित्वा ते जटिले एतद्वोच इच्छामहं भो महासमणे ब्रह्मचर्यं चरितुं यथा भगवन्तो मय्यन्ति तथा करोन्तुति चिरपटिकामयं भो महासमणे अभिप्रसन्ना सचे भवं महासमणे ब्रह्मचर्यं चरिष्यति सब्बेव मयं महासमणे ब्रह्मचर्यं चरिष्यामाति अतिखोते जटिला केश मिस्सं जटा मिस्सं हारिकाज मिस्सं अग्गिहुत मिस्सं उदके पवाहित्वा येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवतो पादेषु शिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतद्वोचुं लभ्येयाम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पवज्जं लभ्येयाम उपसंपदन्ति एत भिक्खवोति भगवा अवोच स्वाखातो धम्मो चरत ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रियायाति सावते सं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि अधस्साखो नदी कश्यपो जटिलो केशमिस्सं जटामिस्सं खारिकाजमिस्सं अग्निहुतमिस्सं उदके बूह्यमाने दिस्वानस्य एतदहोसि माहेव मे भातुनो उपसर्गो अहोसीति जटिले पाहेसि गच्छत् मे भातरं जानाति सामञ्चति हि जटिल सते हि सद्धिं येन आयस्मा उर्वेल कश्यपो तेन उपसंकमित्वा आयस्मन्तं उर्वेल कश्यपं एतद्वोच इदं नुखो कश्यप संयुति आमावुषो इदं संयुति अतिखो ते जटिला केशमिस्सं जटामिस्सं खारिकाजुमिस्सं अग्निहुतमिस्सं उदके पवाहेत्वा येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवतो पादेषु शिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतद्वोचुं लभ्येयां मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पवज्जं लभ्येयां उपसंपदन्ति एत भिक्खवोति भगवा अवोच स्वाखातो धम्मो चरत ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रियायाति सावते सं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि अधस्साखो गया कश्यपो जटिलो केशमिस्सं जटामिस्सं खारिकाजमिस्सं अग्निहुतमिस्सं उदके भूयमाने विश्वानस्य एतदहोसि माहेव मे भातूनं उपसर्गो अहोसीति जटिले पाहेसि गच्छत् मे भातरो जानाति सामंश द्विहि जटिल सतेहि सद्धिं येन यस्मा उर्वेल कश्यपो तेन उपसंकमित्वा आयस्मन्तं उर्वेल कश्यपं एतद्वोच इदं नुखो कश्यप संयुति आमावुषो इदं संयोति अतिखो ते जटिला केशमिस्सं जटामिस्सं खारिकाजमिस्सं अग्निहुतमिस्सं उदके पवाहेत्वा येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवतो पादेषु शिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतद्वोचुं लभ्येयाम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पवज्ज लभ्येयाम उपसंपदन्ति एत भिक्खवोति भगवा अवोच स्वाखातो धम्मो चरत ब्रह्मचर्यं सम्मा दुःखस्य अन्त्यक्रियायाति सावते सं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि भगवतो अधिष्ठानेन पञ्चकट्ठ शतानि च पालिंसु अग्निना उज्जलिंसु न विज्जायिंसु पञ्चमन्दामुखशतानि अभिनिन्नि एतेन नयेन अड्ढूढ पाटिहार्य सहस्राणि होन्ति Okay, you can break here, फिर वापस आएंगे अब
अब सूत्र शुरू होगा, है ना? तो मे भी राजेंद्र जी यहाँ पढ़ ले। तो अब तक क्या हुआ, ये सारे ही जो फॉलोअर्स थे दे हैव नाउ बिकम, ये सारे ही जो एसेटिक्स है दे हैव नाउ बिकम बुद्धा's फॉलोअर्स। फिर वो बहुत सिग्निफिकेंट जो तीसरा सूत्र है आदित्य पर्याय, वो अब देंगे। हम वहां तक कर लें। इंटरेस्टिंगली हमारा ग्रुप जो है कल ही शायद गए थे इसमें, जहाँ ये आदित्य पर्याय सूत्र दिया गया है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स क्वाइट significant to read it on the same day. यहाँ से पढ़ना है। Soon afterwards, an unseasonal storm poured down, producing a great flood. The spot where the Buddha was staying was inundated. The Buddha thought, why don't I drive back the water on all sides and walk on the dry ground in the middle? And he did. Avalokiteshvara thought, I hope the great ascetic hasn't been swept away by the water. Together with a number of ascetics, he went by boat to where the Buddha was staying. He saw the Buddha had driven back the water on all sides and was walking on dry ground in the middle. And he had said to the Buddha, is that you, great ascetic? It is me, Kassapa. The Buddha rose up into the air and landed in the boat. Urvela Kassapa thought, the great ascetic is powerful and mighty in that he can displace the water, but he is not a perfected one like me. Then the Buddha thought, for a long time, this foolish man has thought, the great ascetic is powerful and mighty, but he is not a perfected one like me. Let me stir him up. And he said to Urvela Kassapa, Kassapa, you are not a perfected one or on the path to perfection. You don't have the practice that might make you a perfected one or one on the path to perfection. At that, Urvela Kassapa bowed down with his head at the Buddha's feet and said, Sir, I wish to receive the going forth in your presence. I wish to receive the full ordination. Kassap, you are the leader and chief of 500 dreadlocked ascetics. Tell them first so that they may take appropriate action. Urvela Kassapa then went to those ascetics and said, I wish to practice the spiritual life under the great ascetic. Please do whatever you think is appropriate. Sir, we have had confidence in the great ascetic for a long time. If you are to practice the spiritual life under him, so will all of us. Then after letting their hair and deadlock, their carrying poles and bundles, and their fire worship implements be carried away by the water, they went to the Buddha. They bowed down with their heads at his feet and said, Sir, we wish to receive the going forth in your presence. We wish to receive the full ordination. The Buddha said, Come, monk. The teaching is well proclaimed. Practice the spiritual life to make a complete end of suffering. And that was the full ordination of those venerables. Nadikastapa saw those things being carried away by the water, and he thought, I hope my brother is okay. He dispatched his ascetics saying, Go and check on my brother. Together with the 300 ascetics, he then went to Urvela Kassapa and said, Is this better, Kassapa? Yes, this is better. Then after letting their hair and deadlocks, their carrying pole and bundle, and their fire worship implements be carried away by the water, they went to the Buddha. They bowed down with their heads at his feet and said, Sir, we wish to receive the going forth in your presence. We wish to receive the full ordination. The Buddha said, Come, monk. The teaching is well proclaimed. Practice the spiritual life to make a complete end of suffering. And that was the full ordination of those venerables. Gaya Kassapa saw those things being carried away by the water, and he thought,
I hope my brothers are okay. He did fast his ascetic, saying, Go and check on my brothers. Together with the 200 ascetics, he then went to Urvil Kasap and said, and said, Is this better, Kasapa? Yes, this is better. Then, after letting their hair and dreadlocks, their carrying poles and bundles, and their fire worship implements be carried away by the water, they went to the Buddha. They bowed down with their heads at his feet and said, Sir, we wish to receive the going forth in your presence. We wish to receive the full ordination. The Buddha said, Come, monk, the teaching is well proclaimed. Practice the spiritual life to make a complete end of suffering. And that was the full ordination of those Vinayapiṭaka. By an act of supernormal determination, the Buddha stopped 500 logs from being split. Before then, he stopped fire from being lit before lighting them. He stopped them from being extinguished before extinguishing them. And he manifested 500 pans of hot coal. In this way, there were 3,500 wonders. Wonders. That's it. That's it. That's That's all. it. Yeah. So So it's now before almost 8:30. नहीं रेंद्र जी अब नेक्स्ट सेक्शन है. So we can see या तो हम अभी पढ़ सकते हैं, अब सुत्त आएगा आदित्य पर्याय, या we can do it next time. But basically ये सारे जो कश्यप बंधु थे इनका एक तरीके से वो है ये they all start following the Buddha. Basically ये वो सारे किस्से थे. इनफैक्ट मुझे याद है काफ़ी समय पहले निखिल ने एक वीडियो भी दिखाया था इस पे हमें, करीब 1 आध साल पहले. जी भाई जी, सर ने शेयर किया था हम लोग के साथ, एक पूरा पिक्चर है लंबा सा. जी नेक्स्ट टाइम आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इसके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी और चाह रहा था, क्योंकि मेरे मन में ना एक बहुत बड़ी एक पढ़ते पढ़ते एक कुछ दुविधा हो गई, और वो क्योंकि समय नहीं है तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रखता हूँ उसको. So we'll discuss on it. हाँ जी जरूर And जरूर. nutshell which I wanted to say is that was it, why not the teachings of Buddha made the impact, and why he had to use the supernormal power for them to understand what he had, what he meant by his teaching. ये थोड़ा मेरे को एक कॉन्फ्लिक्ट सा लग रहा है कि ये एक मतलब आई एम ड्रिवन बैक टू द थिंग्स वेयर इन द हिंदू धर्म यही बातें हो रही हैं कि सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और इस वजह से वी शुड बाउ डाउन बिफोर द पीपल rather than the teachings that have more impact. हाँ नहीं राजेंद्र जी बिल्कुल ठीक बात है. और अब आप आगे देखेंगे वो सेक्शन हमने छोड़ दिया. एक्चुअली आइडियली वी शुड डू दैट सेक्शन टुगेदर, जहाँ आदित्य पर्याय सुत्त आ रहा है, विच इज़ द रियल इशू ऑफ ये जो कश्यप बंधु हैं वो आदित्य पर्याय सुत्त के वजह से फिर लिबरेट हो जाते हैं. सो दैट इज़ द ऑपरेटिव पार्ट. ये जो आप कह रहे हैं ना वो बात ठीक है. मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि बुद्ध को वो क्षमता है या थी कि उनके सामने जो लोग हैं वो किस मार्ग या क्या माध्यम उनके लिए सबसे उचित रहेगा जिससे कि वो टीचिंग को रिसीव करने की स्थिति में आए. तो अभी तो टीचिंग आई नहीं है, अभी तो अब तो नेक्स्ट सेक्शन में आएगी वो आदित्य पर्याय तो अभी आएगा. But given the sort of various beliefs of these Kassab Bandhu with respect to fire, worship, sacrifice, वो आपने देखा ही सारा है. How do you get them in a position, in a place where they are then willing to even listen and receive? So this is how I understand it. और सुत्त में बहुत अलग 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 जगहों पे ऐसी बातें आती हैं जहाँ पे ही इज़ यूजिंग डिफरेंट कुशल उपाय, जिससे कि उनकी ऑडियंस जो है वो स्थिति में आए कि वो टीचिंग को रिसीव करे. जैसे आपको याद है वो भी डिस्कशन हुआ था, उनका ये एक कजिन था मेरे ख्याल से, उनका क्या नाम है, नंद और समथिंग, जिनको वो स्वर्ग की कोई एक प्रॉमिस बताते हैं कि इफ़ यू फॉलो दिस यू विल गेट सच एंड सच इन स्वर्ग, व्हिच साउंड्स वेरी ऑड टू अस.
but उसके माध्यम से then Nanda becomes in a position to actually receive it, and then he says, yeah, well, I don't need it. So I think it's that's how I understand, that's how I see it. तो एक्चुअली अगर हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ें तो हमें क्लियर हो जाएगा, ओहो वो तो भूमिका बन रही है, ये तो सब एक तरीके से उस मुख्य टीचिंग की तैयारी हो रही है. Right, right. सो क्लोजिंग थैंक्स के लिए बंटी जी से निवेदन करेंगे. तो एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग, ये सारी जगहों जिनका डिस्क्रिप्शन आया है ना, हमारे अभी लोग सब लोग वहीं घूम रहे हैं एक तरीके से. आई थिंक पूनम हैज मे बी कम बैक और शी स्टिल देयर, आई डोंट नो. एंड सो मे बी एट सम पॉइंट हमें उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहिए टू लाइक शेयर देयर एक्सपीरियंस. खास करके आदित्य पर्याय सूत्र की जो जगह है गया सीस, उसकी अब डिस्क्रिप्शन आएगी. एंड आई थिंक यस्टरडे दे विजिटेड देयर. सो मे बी निखिल वी शुड लाइक प्रिपेयर थोड़ा सा एडवांस में or request one or two of them to maybe share that whole experience there. Okay, so जिस तरीके से आज हमने पढ़ा अलग अलग तरीकों से जो लोग अलग अलग किस्म की मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए थे उनको भगवान ने इस योग्य बनाया, इस काबिल बनाया कि वो टीचिंग रिसीव कर सकें. इसी तरीके से हम क्यों ना ये एस्पिरेशन आज करें कि हम भी इसी तरीके से हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हो कि वी ऑल्सो रिसीव सिमिलर कुशल उपाय, या हमारे मन भी इस तरह से इंक्लाइन हो कि हम टीचिंग्स को ठीक से रिसीव कर सकें और ग्रहण कर सकें. सो टू मी दैट्स द इंस्पिरेशनल thing from today's reading. Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivade Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namam. तो मैंने लेंगे. एक्चुअली मैं यहीं पर हूँ गया में, और हम लोग जैसे आपने बताया, आवाज आ रही है आपको? आई डोंट नो कैसी कनेक्टिविटी है. आपको अगर आवाज आ रही है तो आई विल जस्ट. आ रही है, आ रही है. तो जो आप पढ़ रहे हैं वो हम सब कल, एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके. कल हम लोग शाम को पूरा दिन बिताए हम लोगों ने, परसों शाम को गयासीस में, जहाँ पर अजान केवली ने इस बात को पूरा जैसे आप पढ़ रहे हैं तो इसको डिस्क्राइब करते हुए हमें बताया कि ये जो कश्यप ब्रदर्स थे उनको क्योंकि वो लोग एस्थेटिक प्रैक्टिस में बिलीव करते थे, दैट इज व्हाई that's how he tried and teach Dhamma to them. क्योंकि हमारे लिए भी ये नई चीज थी कि इस तरह से कि वो सुपर नेचुरल पावर को लेकर के इस तरह से वो डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी पावर को. तो हमारे लिए ये भी फर्स्ट वर्णन हमारे लिए बहुत मतलब ये था, नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं होता. तो अजान केवली ने बताया, हालांकि बाकी सब लोग भी आकर के बताएंगे. तो एक तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगा कि वहां पर जहाँ पर ये आदित्य पर्याय सूत्र हुआ वहां पर हम थे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सुन रहे थे. तो एक और बहुत अच्छी चीज लगी. और दूसरी हमने एक जगह देखी, दुंगेश्वरी, जहाँ पर भगवान ने एस्थेटिक प्रैक्टिस की थी फॉर 6 years, ऑलमोस्ट 6 years. और सुजाता की जहाँ पर खीर खाई हमने, वहां पर भी जाना हुआ हमारा.
तो अभी तक की तो मेरी यहीं तक की जर्नी है। आगे की जो राजगीर और वो है वो बाकी सब लोग आप लोग से शेयर करेंगे। मेरी यहीं तक की गया तक की जर्नी थी। तो तो जो एस्थेटिक प्रैक्टिस के लिए बोल रहे थे, जो हमारी अंदर मतलब जो अजान की अवली का था, तो एक एक मानस जो बंते जी कह रहे कि मानस बनाने के लिए, या कह लीजिए कि जो जैसी उनकी टेम्परामेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही ट्राइड एंड आंसर्ड देम, एंड व्हेन they were ready for for receiving the teaching, then Buddha gave this teaching to Aditya Parayat, and we are going to read next section. So it's very nice to be here, or it's such a heartwarming, पता नहीं मुझे कैसी बहुत अच्छी सी फीलिंग भी है, और बहुत I feel very indebted to Buddha also and everyone here in the group also. So that's it. Yeah. So we'll describe, maybe later on the whole journey will be described by the group later on. So I just wanted to share this. Thank you. Thank you, Poonam ji. Sadhu, sadhu, sadhu. Very nice, Poonam. Thank you. बहुत अच्छा. Very, very happy to get a live, description. Very nice, very nice. Yeah, we all celebrate आप सबकी opportunity जो आपको वहाँ मिल रही है. Much punya has to be there for that to be the case, So yeah, wonderful. बहुत आप सबका बहुत It's really good to be here. Bodhi tree में meditation करना नीचे. It's such a pleasure to be here. Thank you everyone for giving opportunity. Everyone actually in the group. Thanks. बंते जी को हम सभी 3 बार प्रणाम करेंगे। प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, तृतीय प्रणाम। नमस्ते सर। Pranam Bante. Thank you very much.